Good evening, everybody. Good evening, all. I hope you are all fine. First of all, happy Mother's Day to all of you. This is the day when we are blessed to remember all these things about mother's contribution in our life. I wish all your mothers about this. Okay, so let us start with the discussion. This is Current Affairs, May 1st, 2024. All right, so let us start with the discussion. First, current affairs weekly issues गुड़ा को discuss करिए और objective बहुत simple. बहुत समय एमती माइंड रे आसे कि व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी. करंट अफेयर्स रे भी बहुत गुडे एरिया अछि ना जोटा को हमें एक्चुअली वी ओवर थिंक ऑफ इट. से गुड़ा को पढिबा दरकार नाही तथापि हमें बाध्य होई कि पढंती. ओके, सो ए डिस्कशन थ्रू रे मु आपन को बतेबी जे को एरियाज गुड़ा को अपन टारगेट करिवे और को एरियाज गुड़ा को इग्नोर करिवे. राइट, चलो. So let us start with the discussion. First question: which country hosted the World HRD Congress where Sartek received prestigious accolades? Correct. एक तो ये जो accolades अच्छी, this is what? Check करिए ठीक है. यार माने कौन? Okay, basically certain kind of honor. Philippines is the answer. Correct. Philippines. मन पड़ुची Philippines रे जने प्रेसिडेंट थिले तांको ना थिला कोन? रामन मैगसेसे. रामन मैगसेसे. ऑलराइट, यहाँ को ना ऊपर ही तो दिया जाउची ना, रामन मैगसेसे अवार्ड. राइट, दिस इज फिलीपींस. कैपिटल है गला कोन? मनीला. राइट. सेकंड क्वेश्चन देखो. व्हिच क्लाइमेटिक फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेंपरेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन? यार आंसर अपन को समस्त जाना अछि. राइट, लानिना इज द आंसर. लानिना इज आल्सो नोन एज लिटिल गर्ल. ओके, अब एल निनो को कहउचंती क्राइस्ट चाइल्ड. सो इतरा कोन होची देखो भल से ठीक है, ऑब्जर्व करिवे. इफ यू सी दिस पैसिफिक ओशन, नॉर्मल ईयर रे कोन होची ना, एटा होची दिस इज द ईस्ट पैसिफिक ओशन. दिस वन इज द ईस्ट पैसिफिक ओशन एंड एटा होची पैसिफिक ओशन रो वेस्टर्न साइड. नॉर्मल ईयर रे कोन हुए ना, ए जो रीजन अछि ना पैसिफिक ओशन रो जो वेस्टर्न साइड, एटा बेसिकली कोन हुए कंपैरेटिवली अधिक गरम ही जाए. एज अ रिजल्ट कोन हुए, एटी लो प्रेशर्स गुडा डेवलप हुए. आउ एज अ रिजल्ट नॉर्मल प्रोसेस जहा कहउची जे हाई प्रेशर सेल एटी डेवलप होची. अब हाई प्रेशर रू लो प्रेशर आड़कू विंड गुड़ा कौन हुए मूव करिया स्टार्ट करे. एंड विंड इन द सेंस मॉइस्चर कैरिंग विंड. आउ सबटो अधिक रेनफॉल कोठी होची ए रीजन रे नॉर्मल ईयर रे होय. ओके, यस सरोज आई कैन सी यू. यस, गुड इवनिंग. ओके, एल निनो ईयर रे कौन होची? एल निनो इज ए स्पेशल ईयर. यू कैन से इट्स एन एबनॉर्मल ईयर वेयर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन गेट्स वार्मर. ईस्टर्न साइड एठी ता माने लो प्रेशर क्रिएट हबो. पिला माने लो प्रेशर क्रिएट हला माने जानिबे सेठी कोन हबो? रेनफॉल रो चांसेस अधिक हे जिवो. आउ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ताले कोन हे जिवो? ड्राई हे जिवो. त माने यू सी यार इंपैक्ट ता ऑस्ट्रेलिया ऊपर पडिबो, एडजेसेंट इंडोनेशिया ऊपर पडिबो एंड फाइनली इंडिया ऊपर भी पडिबो. So in El Nino years you will see dry spells of monsoon in the Indian subcontinent. आउ कोन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साइड रे कोन हे जाउची? राइट, drought बढ़िया condition create ही होची. Okay, so this is El Nino, La Nina. Very important concept. Now, what is reduced windfall tax rate? एक तो एक question रे देख ले. When I say what is this windfall tax? Windfall tax. Okay, windfall माने कोन? गोटे लोक जदी तारो normal income ठू गोटे abnormally अधिका income करिवा स्टार्ट करे माने जदी suddenly ताको गोटे बहुत बड़ income आसी जाय, that is called windfall gain. That is called windfall gain. Okay, now petroleum marketing companies माने जो अछंते ना, जेमति आज में कहबा BPCL हेले, HPCL, whether they are in the private sector or public sector. Okay, से माने कोन हुए? माने तो क्रूड ऑयल जते बेले माने नियो तो $120 पर बैरल थिला, सेते बेले से माने कोन करथले? दे यूज्ड टू सेल द फाइनल प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस. जते बेले यार प्राइस कमुची ना, माने तो 120 रु कमी की माने नियो तटा कमी की $110 हे गला पर बैरल. नाउ व्हाट विल हैपन? ए कंपनीज माने निजर फाइनल प्रोडक्ट रो प्राइस टा को कमेबेनी, दे विल स्टिल कीप ऑन सेलिंग एट द सेम प्राइस. ओके, एज अ रिजल्ट कोन होबो ना, एमानो को जो डिफरेंस टा आसिला ना, ए जो $10 रो जो डिफरेंस रहउची पर बैरल रे, एटा होची कोन? याकू जदी आप मल्टीप्लाई करिवे ना टोटल वॉल्यूम ऊपर, ताले इट इज अ वेरी बिग अमाउंट. ओके, सो एटा ही होची विंडफॉल गेन ताको पय. गवर्नमेंट कोन कला देखला, माने कंपनीज माने दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स.
out of this price difference. Setime samane kon kale na windfall tax introduce kale. Okay, here you see, if you see this windfall tax, kon eta na it is here 8400 rupees, the windfall tax. Okay, I hope this point is clear. Jani parle what is windfall tax, both important concept gote. When was Maharashtra officially formed as a separate state? Tikke mone poduchi apno State Reorganization Act पढ़ी कि मन पकांतु इंडियन पॉलिटी रे गोटे टर्म अछि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which year 1956 रो या परे परे मन पकांतु 14 states were created आउ 6 union territories were created, all right, out of this ता परे परे 1900 यार जस्ट परे परे 1960 May 1 रे which became the 15th state of India, it was Gujarat became the 15th state of India. Okay, yes Madhusmita, I can see. Good evening to you as well. Okay, so Gujarat hegala kon 15th state of India, and that too as of State Reorganization Act of 1956. So 1960 रे हेगला कोन महाराष्ट्र तयारी हितला, महाराष्ट्र ठू गुजरात को सेपरेट करा गला. Okay, then this is Maharashtra. Then you see who became the vice chief of naval staff. This answer is very clear. Vice Admiral Krishna Swaminathan. पिला माने whenever you come across this kind of issue, suppose कोनोसी गोटे office, suppose किए गोटे public office join कले केही भी, if it is a public office, I request you तांकर photo कम से कम देखिए. You see the photograph of the person who has taken that office. Very important. एटा छोटो कथाटे किंतु एग्जाम रे बहुत बड़ो रोल प्ले करे आ बहुत डिफरेंस आनी आसे. If you have seen the image, जदि इमेज थोड़े भी देखी थी ना ताले माइंड रे आसी जीवो ना एटलीस्ट आंसर टा एया. Okay, then next, when did Indian players win both men's and women's double title at 6th Asian Carom Championship? Right, where did, right, this is Mali capital kaharo na Maldives ro, if you remember Maldives capital. Maldives e recently बहुत news रे थिला. Okay, गोटे campaign थिला ना India Out campaign. Do you remember India Out campaign? Okay, who is the present president of Maldives? Okay, now what is this 8-degree channel? Correct, I can easily give the answers, किंतु मु चाहूची आपण माने निजे सर्च करंतु याकू. निजे सर्च करले ना जानि परिबे जे गोटे जिंस गुडा कोन. ओके, आउ सेरा रिटेन करि रख परिबे. राइट, गला. So this is India Out campaign and the 8-degree channel. Then asila kono, who recently took charge as the presiding officer of Securities Appellate Tribunal. ठीक है, मन पकांतो क्लासरूम रे जेतला हम डिस्कस करूथले what are these tribunals. All right, article केते डिस्कस करूथली, article 32 रे हम डिस्कस करूथले writs. Okay, tribunals, you see these are right, these are quasi judicial bodies. Right, either they may be formed by the government act, the parliamentary act, or by the Supreme Court as well. Okay, so Securities Appellate Tribunal यारो नुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हेले जस्टिस दिनेश कुमार. यारो किछरा एग्जांपल भी अछि जेमति अदर ट्राइब्यूनल्स, जेमति कि गोटे हला यू नो दिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अछि. ओके, जदि रिवर्स ऊपर देखिया पिला माने रिवर्स ऊपर भी किछरा ट्राइब्यूनल्स अछि. Right, interstate river water dispute tribunals. Okay, this is one. Then which organization achieved a significant milestone with successful flight test of supersonic missile, that is smart system? पिला माने एटा DRDO is a clear answer, किंतु टिके देखिले यारो you know यारो importance टा कोन. Right, suppose एठी गोटे enemy nation रो गोटे submarine अछि. This is an enemy nation. Okay, आउ एठी Indian Navy रो warship अछि. This is a warship. Okay, if you know this or not, INS Arihant जोटा थिला तार significance जानि चंदे कोन? What is the significance of INS Arihant? This is your homework. Okay, जेतबेले तयारी हितला INS Arihant तार uniqueness कोन थिला? So this is a warship. ये कोन करिवो ना हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढी चंती.
ओके मिसाइल सिस्टम रे हमें डिस्कस करथले एई ऊपर पोर्शन टा होची वॉरहेड आ तळ पोर्शन टा होची फ्यूल एटा होची फ्यूल ऑलराइट आ एटा ऊपर पोर्शन टा होची वॉरहेड तो वॉरहेड कोन करूची फ्यूल चैम्बर माने ए जो मोटर और फ्यूल चैम्बर रॉकेट सिस्टम ताकू नेकी जाउची गोटे पर्टिकुलर एरिया को तापरे एडी देखंतु एई पोर्शन रु डिटैच हे गेला कोन फ्यूल चैम्बर एपे से कोन करिवो ना एज इट इज ए बैलिस्टिक मिसाइल से कोन करिवो ग्रेविटी थ्रू रे एटू खसिबो एठू खसिबा को थ्रू रे ग्रेविटी थ्रू रे बतैतली मन पकांदु ओके खसिला परे जेहेतु एटा गोटे टॉर्पेडो से कोन करिवो टॉर्पेडोज आर यूज्ड टू मैन्युवर इनसाइड वाटर बॉडीज ओके तो से कोन करिवो पैराशूट थ्रू रे तारो स्पीड टाको डिसेलरेट करिवो तापरे से कोन करिवो पानी भितर एंटर करिवो यू कैन सी दिस इज ए स्पाइरल देई कि से कोन करिवो अल्टीमेटली जो माने सबमरीन को टारगेट करिया थिबो ताकू डेफिनेटली टारगेट करिवो ओके दिस इज अ स्मार्ट system right it is a supersonic missile assisted release of torpedo correct then which day is the national labor day very easy question national labor day kintu question to hoje kono na e barsar theme kon thila number 1 what was the theme of national labor day this time this is your first question all right next question hoje kono na eta ko year ru celebrate heba start hela को year ru ओके अच्छा आउ कोन नेशनल लेबर डे रे टिके मन पड़छ आपन को एई दिन रे आउ कोन कोन इंपोर्टेंट डे अछि अदर डेज ऑन मे 1 करेक्ट चेक करिवे सब देन which state government suspended the license of 14 products from Patanjali Ayurveda you must be knowing it was Uttarakhand okay next उत्तराखंड को भलो से कल्चर करिए पिला माने you see Uttarakhand is such a beautiful state right 2000 रे the year 2000 रे एटा तैयारी हला the state was called Uttaranchal in those days this was called Uttaranchal in 2000 itself okay उत्तराखंड को देवभूमि कहउचंती देवभूमि रिलीजियन एस्पेक्ट रे ए स्टेट रे बहुत अधिका सिग्निफिकेंस अछि ओके सो नेक्स्ट वन what is the primary objective of China's Chain 6 lunar probe mission the objective is gather sample from the moon correct China's Chain 6 China विषय आउ भी गोटे जिंस आज ही संडे दिन आज क्लास रे हम डिस्कस करथले do you know what is this Tiangong what is Tiangong in China right से टेक्नोलॉजी हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चाइना सबुथरे आगे अछि okay so you just know it which institution awarded a patent for its cost effective inverter ठीक है मते कहले पेटेंट को आमे आईपीआर कहि परिबा कि is patent a part of intellectual property right ताले जदी गोटे जिंस रे पेटेंट लागुची ताले दी प्रकार पेटेंट लागि परिबो गोटे हला प्रोडक्ट पेटेंट आ गोटे हला प्रोसेस पेटेंट ताले what is the validity of a patent what is the validity of a patent एठी आंसर हे गला कोन आईआईटी पटना करेक्ट आज सकाळे ही पचारली पटना इज ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर पटना जोटा को पाटलिपुत्र हिसाब रे भी जानंती व्हिच रिवर इट इज ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर ओके पटना देन व्हिच कंट्री हैज इंडिया रिन्यूड एन एग्रीमेंट और टू ट्रेन 1500 ऑफिसर्स एटा होचे बांग्लादेश बट डू यू नो ए बीबीआईएन टा कोन what is this BBIN what is this BBIN all right related to Bangladesh okay अच्छा आउ गोटे अछि गोटे पेट्रापोल अछि पेट्रापोल कोन आउ बेनापोल कोन एटा सब कोन what are these things सर्च करिए okay आपण थ्रू आउट द वीक यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स राइट किंतु पढिला बेले आपण आउ कोन एक्स्ट्रा जिंस सर्च करूछंती है ना आई वांट दैट इन यू कि आपण जो वे रे पढुचंती दैट हैज टू बी स्ट्रीमलाइंड देन where was India's first constitution park inaugurated this was in Pune if you remember Pune is also known as Oxford of the East Pune रो बहुत गुडा सिग्निफिकेंस अछि ओके Pune जदि हमें देखिबा नेशनल यू नो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आउ कोन
Now it is also called Oxford of the East. I'm talking about Pune, huh? Pune. ठीक है मन पकांतु एठी आउ कोन अछि ना एठी सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी अछि सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी रवि एठी अछि ओके पुणे मन पकांतु एठी येरवाड़ा जेल भी तो अछि टिके मते चेक करी कहिबे पिला माने वेयर इज दिस आगा खान पैलेस आगा खान पैलेस वेयर इज दिस आगा खान पैलेस आउ यार सिग्निफिकेंस कोन गांधी को सहित how Gandhi is linked with this Aga Khan Palace. Okay, next. Now, which organization is investing 5,215 crore in renewable energy for 1 gigawatt capacity? It is Indian Oil Corporation. सीधा सीधा आंसर यार. किंतु एठी मते कहले renewable energy रो sources पूरा सब कौन कौन? What are the sources of? And what are the sources of renewable energy? And do you know what are these energy? E energy, right? Or if I can say E cell energy. E cell energy टा कौन? गोटे नुआ टर्म कहूँ हुए तो जानी थी E cell energy कौन? What was the record high GST revenue collection in April 2024? देखो तो बहुत थोड़ा ऐसे माइंड रे आसे जे एटा मन रखिया ना मन रखिया नहीं. If it is about a particular month, ताले एटा एक तो मन रखिया बहुत difficult. कारण कि एप्रिल पर मे आसुची मे पर जून भी अछि ता पूर्व मार्च थिला फेब्रुआरी थिला जनवरी थिला सो प्रति मास हिसाब रे जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन मन रखी कि एटलीस्ट माने माइंड टाको आउ अधिका बर्डन करिबेन ओके एक तो मन रहिबनी सो एति किंतु जानिबे जीएसटी इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 279A टा कोन कहूची व्हाट इज आर्टिकल 279A and what is article 265 the article इदिटा एक आर्टिकल कोन कहूची okay GST all right and which was the first country in the world to implement GST implement goods and services tax which was the first country in the world all right acha next question देखो who was honored with her for her outstanding contribution to corporate social responsibility CSR कोन India रे जदि देखिबा if a company has been registered under the Companies Act 1956 or 2013 कहंतु पेरेंट एक्ट तो 1956 रही थिला ओके तो या अंडर जे भी रजिस्टर करिथिबे कंपनी जो माने एस्टैब्लिश हेथिबे दोस कंपनीज if their profit is above a particular level then they have to pay or they have to keep aside 2% of their profits for social welfare things okay जेमते कि roads schools hospitals एगुड़ा सब plantations electricity एगुड़ा सब okay then so this is Beena Modi. Which country engaged in talks with India to enhance trade cooperation? This is again Maldives. Maldives रे you know tourism ऊपर बहुत किसी controversy हेतला मजरे due to this you know Lakshadweep issue. Okay, so again Maldives is also माने एमिति नो Maldives से तो relation कटी ही जाइए. Then when is Tuna Day observed annually? Tuna Day May 2 is very easy. Tuna. Okay. Now, where is 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting ATCM to be hosted? It is in Kochi, Kochi, Kerala. Kochi. ठीक है मन पड़ुची. What is the significance of Kochi? ठीक है मत कहि परिबे where is this Coir Board of India? Coir Board of India रो headquarter कोठी अछि. Coir Board of India रो headquarter. Right. Then now where is Bhimtal Lake located? Bhimtal Lake, Uttarakhand. Bhimtal Lake. Then who received the Green Oscar, that is Whitley Gold Award in 2024? It was Purnima Devi Burman. But जदि देखिबे ए Oscar रे ही Oscar awards are given for the you know film industry, original Oscars. Okay, but Green Oscar कौन का कहउछन्ते Whitley Gold Award. Correct. Oscars. This is also called Academy Awards. Which company has been named as the lead arm sponsor for the US
and South Africa cricket teams in the T20 World Cup. Okay, this is Amul. Then which company's Sanand unit in India is set to roll out its first batch of domestically made semiconductor chips? Okay, this is Micron. Micron. Under Make in India campaign, this has been done. Semiconductor raw, jodi mu kahibi raw material kon. What are the raw materials to manufacture semiconductors? All right, or microprocessor chip jaha ko puchanti. Sanand, why it is important? Sanand is in which state? Okay, then which company secured $400 million in financing for its 750 megawatt solar projects in Rajasthan and Gujarat? Adani Green Energy. Solar project leading players mane hochante mane Rajasthan, Gujarat, Maharashtra. Which country will host 2025 BWF Junior World Badminton Championship? India. This is easy. Okay. Which company has joined India's top 5 companies by market capitalization? Aji hi discuss kortla sakale manu pakantu. Right? What is this market capitalization? It's a very important term in economics, especially capital market. Market capitalization mane niyantu Bombay Stock Exchange achi. Bombay Stock Exchange re total suppose 7,000 plus companies have been listed. माने ए कंपनीज मानकर शेयर सेठी केना बिका होची. ओके, सो सपोज गोटा कंपनी अछि रिलायंस. ऑलराइट, यारो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हे गला केतरा ना 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एटी अछि. ओके, आ गोटे शेयर रो दाम जदी हम कहिबा 10 रुपीस ताले टोटल आई एम साइटिंग एन एग्जांपल ओनली. ओके, इट मे बी मच मोर देन दैट. सो जदी हम कहिबा एटा हे गला केते 10 लाख रुपीस. ओके, ताले ए 10 लाख रुपीस टा होची कोन ना रिलायंस रो मार्केट कैप. दिस इज द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस. एमिति ही अपन जे देखिबे एठी बर्जर पेंट्स अछि, बर्जर पेंट्स अछि, टाटा इज आल्सो देयर है ना. तो हमें इंडिविजुअल कंपनीज मानकर मार्केट कैप बाहर कर परिबा. समस्त को जदी ऐड कर दबा सब कंपनीज मानकर मार्केट कैप सपोज ऐड करली एंड आई फाउंड 100 लाख करोड़ रुपीस. ताले ए 100 लाख करोड़ ता कोन हे गला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो मार्केट कैप. This is the market cap of BSE, 100 lakh crore. Correct. So what is market capitalization? Market capitalization individually companies मानकर बाहर कर परिबा आउ गोटे stock market रो भी market capitalization बाहर कर परिबा. So if you see गोटे stock market रे तीन प्रकार companies थांती based upon their market cap. All right, so they are basically small cap company, then they are mid cap company, आउ फाइनली आसला कोन ना लार्ज कैप कंपनीज. पिला माने आगरु ए टर्म हुए तो सुनी थिबे पढिथिबे, बट नो दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. राइट, एटा गला कोन स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड द मिड कैप कंपनीज. ओके, नाउ what is the initial rate set by RBI for floating rate bonds maturing in 2034? Again एटा हमें जेतबेले कैपिटल मार्केट पढुतले क्लास रे बेटा डिस्कस करी छी है ना. सो इफ यू सी these bonds, floating rate bond, second kind of माने जोटा जीसेक अंडर रे आसुची. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर रे तीन प्रकार रो गवर्नमेंट रो सिक्योरिटी अछि. ओके, गोटे हला फिक्स्ड मैच्योरिटी बॉन्ड, आउ गोटे हला फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, आउ गोटे हला कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स. कैपिटल इंडेक्स्ड bonds. All right, so here it is talking about the second type of bond, it floating rate bond जोटा हमें डिस्कस करथले मन पका. ओके, सो ये गला कोन 8% गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स गुडा रे नॉर्मली एतिकी ही इंटरेस्ट माने रिटर्निंग रेट थाए, रेट ऑफ रिटर्न. When was the Street Vendors Protection of Livelihood Regulation Act enacted? This was in 2014. Okay, ठीक है मन पकांतु इठी. Do you know who are the gig workers? Gig workers कोन, गिग इकोनॉमी कोन, एटा सब कोन. ओके, then next देख ले. When was the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure launched? This was 2019. Disaster Resilient Infrastructure CDRI. Okay, so या सहित associated अपन जानि चंती की मत कहिबे जे सेंडाई फ्रेमवर्क कोन. What is this सेंडाई फ्रेमवर्क?
Sendai framework. Okay, and is Sendai a city? Now, World Press Freedom Day. World Press Freedom Day asla May 3, but mone pakaile jodi mu kahibi press freedom, is it coming under article 19(1) subclause A? Article 19(1) रो subclause A रे press freedom विषय लिखाई जी की कोठी, correct? ये गोटे question. Next, who has been appointed as director in the Department of Promotion Industry and Internal Trade? Pratima Singh. You see his photograph. Pratima Singh naru laguଥିବା au kichi, kintu the answer is this. Right. Now, what event did Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, and Indian Institute of Petroleum celebrate recently 65th Foundation Day? Council of Scientific and Industrial Research. You know, what was the old name of ISRO? ISRO जिबे तैयारी हला, the year was 1962. All right. 1969 year नाटा ISRO दिया गला, किंतु 1962 रे या नाटा कौन थिला? चेक कले ठीक. Okay. कौन पढ़ुचंती पूरा वीक रे? That matters a lot. Okay. Which bank collaborated with ANQ to launch PI and PHI credit cards? This was Yes Bank. All right. So bank रो जदि banking exam पे prepare करूचंती, ठीक है मन पकांतु. बैंक रो क्लासिफिकेशन सब कौन कौन? बैंक को एक तो रेगुलेट किए करूची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई कौन कला ना, जो माने आरबीआई एक्ट 1934 रो सेकेंड शेड्यूल को एडहियर करूचंती, सेमान को कहा जीवो कोन? दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंडिया रे केते केते प्रकार रो? वन आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, next are private sector banks, next are foreign banks, and later they are called regional rural banks. All right, so these are all the classification of banks. Kintu jodi out side dekhiba, they are payments bank as well, payments banks. All right, next small finance banks. तो ए सब टर्म गुडा को जानंतु, जोठी भी डाउट अछि ना, you have mobile phones, चेक करंतु एगुडा को. करेक्ट. पेमेंट्स बैंक और रेगुलर बैंक भीतर फरक कोन? स्मॉल फाइनेंस बैंक और रेगुलर बैंक भीतर फरक कोन? डिफरेंस टा कोन? ओके. नेक्स्ट तो ये असला. नाउ वेयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस सेट टू ओपन स्प्रॉलिंग न्यू कैंपस? स्प्रॉलिंग इन द सेंस अ वेरी वाइड एरिया. So it is Gurugram. Then which Indian state announced India's first astro tourism campaign named Nakshatra Sabha? It is Uttarakhand. देखो ये टूरिज्म रे ना बहुत बड़ा एस्पेक्ट होची. One type is called astro tourism. All right, health tourism is there, then adventure tourism is there, okay, eco tourism is there, economic tourism is there. So it looks like this. Summer vacations re Uttarakhand जाउचंती और सेठी कोन करचंती ना, astrology means space sky और ये aspect को समाने explore करचंती. Okay, this is Nakshatra Sabha, Uttarakhand. Now India in the World Press Freedom Index, what is the rank of India? Okay, it is 159. World Press Freedom Index. Question होची कोन? ए World Press Freedom Index को रिलीज किए करूची? Who is releasing this report? Who? All right. Then next one. Now, with which country's Auditor General did CAG sign a memorandum of understanding to enhance collaboration? Okay. This is Nepal. This is Nepal, right? Then, now who has been appointed as president of GST Appellate Tribunal? GST Appellate Tribunal. Okay. किए ये ना संजय कुमार मिश्रा. Sanjay Kumar Mishra is the answer. All right. Next, who has been appointed as Secretary of National Jute Board in Kolkata under Ministry of Textiles? Right, Shashi Bhushan Singh. This is the answer. Okay. Jute. Take a monopurji. What is the history of jute in India? Do you remember it? The history of jute.
all right, first jute factory in India, all right, first jute factory in India, all right, which is called golden fiber, which is called golden fiber. Which is called golden fiber. Then where was second session of India Nigeria Joint Trade Committee held? This was Abuja, correct? Abuja puni kahar capital. What was the revised GDP forecast for India by OECD? All right, देखो तो यही टाइप रो क्वेश्चन अपन बहुत फेस करिवे. यार गोटे माने सॉल्यूशन कोन ना जो जीडीपी फोरकास्ट उडा किए करूचंदी सेटा देखंतो आगे. There would be international organizations and national organizations. All right, international organization कोटा मन रखिबा. देखो तो प्रैक्टिकली आपण सब मन रख परिबेनी. इंटरनेशनल साइड रो अपन देखिबे किए फोरकास्ट करछि जीडीपी इंडिया रो. ऑल राइट, जदी से आईएमएफ हेताय, जदी से वर्ल्ड बैंक हेताय, जदी से एशियन डेवलपमेंट बैंक हुए, न्यू डेवलपमेंट बैंक हुए, ऑल राइट, एमिति किछरा इंस्टीट्यूशन फोरकास्ट करछथि, देन ओनली दीस आर इंपोर्टेंट. ओके, हां, ओईसीडी इज आल्सो देयर. सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पार्डन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जदी करथिबो ताहले भी दीज आर ऑल इंपोर्टेंट. नेशनल साइड रे अपन देखिबे जदी आरबीआई प्रेडिक्ट कला, नहले सपोज नीति आयोग प्रेडिक्ट करछि, ए प्रेडिक्शन गुडा मन रखिबो. ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जदी प्रेडिक्ट कला, हां, तो ये हैला कोन 6.6%, इंडिया विल ग्रो एट 6.6%. ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो तो. Now who is set to receive the Cannes honorary Palm Order award? Eta hochi kon Meryl Streep. Then when is International Day of Mines Awareness and Assistance? Eta hochi kete na April 4. Mines, right? Jaha ko hame underground mines kohchandi, in the sense, you know, the you know, this like bombs au jo Naxalite areas re mines hota hai, se guda. Okay, then what is foreign portfolio investor limit set by RBI for GSEC? देखो एबे recently GSEC कहिछि, आ पिले एग्जाम रे पढि छिबि. GSEC कोन, एटा एग्जाम रो क्वेश्चन थिला. व्हाट आर GSEC? ओके, कैपिटल मार्केट रो एगोटा इंस्ट्रूमेंट, राइट, आ तीनटा टाइप कहली GSEC रो. दिस आर बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड. सो इतरे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गोटे कांसेप्ट, RBI गोटे अलगा कांसेप्ट, आ GSEC आर डिफरेंट. ओके, तो एठी जदी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहबा, that means it is a foreign investment done in certain group of shares. Portfolio माने group of shares को portfolio कहउछंती. ओके, तो इथरे लिमिट केते सेट करछि 6% रो. ये अवश्य ये गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन, किंतु इथरे तीनटा कांसेप्ट अछि देखो. Now which bank has partnered with Tata Motors to provide financing solutions for its commercial vehicle customers? This is South Indian banks. Okay, then what percentage of seats in the Supreme Court Bar Association Executive Committee are reserved for women? Naturally, it's 33%. तो जदि अपन ए टर्म सुनी चंती केबे, तथापि जान रखथांतो, there is a term called Bar Council of India. Bar Council of India, ये गोटे प्रेशर ग्रुप. ओके, तो Bar Council of India विषय टिके आइडिया रखिबे. Then next you see, which country's navy engaged in maritime partnership exercise with Indian navies involving tactical maneuvers? Eta kiye thila? Netherlands. Netherlands ro लोकमान को कोन कहउचंती? Locally they are called what? Dutch कहउचंती की. Netherlands capital हेगला कोन? Amsterdam. All right, my question is very easy. कोन ना Amsterdam port रोजी कोठी temperate region रे, किंतु ये तथापि कौन हुए ना थ्रू आउट द ईयर ये ऑपरेटिंग कंडीशन है काहे की. फॉर विच ओशन करंट गोटे ओशन करंट अछि, ता ना कोन चेक करिवे. फॉर विच ओशन करंट्स दिस एम्स्टरडैम पोर्ट रिमेन्स ओपन. एम्स्टरडैम पोर्ट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर. ओके, से ओशन करंट रा ना चेक करिवे, राइट. नेक्स्ट, which pharmaceutical company admitted that its Covishield vaccine can cause rare side effects? This was AstraZeneca. तो एतिक तो जानि परछन ना, AstraZeneca Covishield प्रोड्यूस करछि. Now who won the regional Cambridge dedicated teacher award for Middle East and North Africa? एटा थिले जीना जस्टिस.
So this is it, friends, on this Mother's Day. This is the last question that we have to discuss. Okay, किंतु जीवा पूर्वरु एतिकी गाइड तो करी भी कम से कम. We are conducting the classes on Sundays as well. Sunday दिन प्रति Sunday सकाळ 8 ରୁ 10ଟା 8 AM to 10 AM we are conducting the classes. Okay, ए classes गुडा को ना improvement classes कहउछन. वीक रे आपण जहां भी पढुछन those are all they are related to your syllabus. Syllabus माने कोन माने डायरेक्टली जहां दिसुजे, किंतु संडे क्लास रे कोन आपण से एक्स्ट्रा जो एफर्ट गुडा हमें दोछन ना, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा concept building जहां भी हमें करूछन, these classes are very important. Okay, so पढंतु भलसे गोटे शेड्यूल मेंटेन करी पढी पढी चलंतु. Okay, but one thing, continuity maintain करंतु. Continuity is the key. All right, so let us wind up the session here today. Thank you so much for your patience hearing. Okay, we'll meet in the next week with the second week of May. All right, till then, bye bye everybody, and enjoy the day. Right.